East Department, SC/ST Liaison Officer. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म की प्रतिज्ञा ली थी, दीक्षा ली थी, इसीलिए प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम बुद्ध वंदना लेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। Myself, Vishnu Kumar, wishing you all on this auspicious day of Ambedkar Jayanti, now celebrated on the birthday of the most profound, powerful leader, powerful politician, women emancipator, economist, globally writer, theorist, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. So here I am to present a Hindi poem to show my respect on his birth anniversary. मेरी यह कविता उनके जीवन की कठिनाइयों और यातनाओं के साथ उनके गौरव इतिहास को दर्शाता है। तो आप सबसे यह निवेदन है कि इसमें लिखी हर पंक्ति को उतनी गहराई से समझे जितनी गहराई से उन्होंने लिखी। मध्य प्रदेश की भूमि पर एक बच्चे की किलकार लगी। दोष मेरा बस इतना था कि जन्म से मुझ पर दाग लगी। महान जाति में पैदा होकर मैंने कैसा पाप किया, न माँ की कोख में खेल सका और अनाथों जैसा श्राप मिला। भेदभाव तो सह जाता पर अपमानों का क्या करूं, मेरी सांसों को भी थाम और परछाई कर लहू को तो बांट दिए तुम, जैसे हर जाति का खून अलग हो। प्यासों में भी भेद दिखाया, जैसे पानी की ज्यादा हो। टूट चुका था इस समाज से, मगर पी रहा हूं मैं पलना होगा। एक पल को भी हार गया तो मुझे इस समाज में करना होगा। खड़ा हुआ मैं अटल पथ पर, जैसे हर विपदा को चीर गिरा हूं, मगर चरित्र पर दाग बचाकर मैं इस भूमि की मान बढ़ाऊं। लगन लगाकर सब बुलाकर कदम बढ़ाकर चलते जाऊं, ज्ञान को पहचान बनाकर सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूं, ज्ञान को पहचान बनाकर सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूं। रत्नागिरी के निचले तबके से एल्फिस्टन का शान बना, फिर कोलंबिया या लंदन हो, हर जगह भारत का मान बना। संविधान की रचना हो या RBI का बनना हो, भारत के माथे पर से जाति भेद का श्राप रहा। देश के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्रालय की शान रहा। आजाद भारत के यथाक्रम में मेरा यह योगदान रहा। मैंने एक समाज में हर इंसान की एक समान ही इज्जत मांगी, चाहे विपदा कितनी भी बड़ी थी, मैंने कभी दहलीज ना मांगी। परमात्मा के हैं हम सभी, किसी में कोई भेद नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु का गीता में भी सारी ही है। आत्मवत् सर्वभूतेषु का गीता में भी सारी ही है। धन्यवाद। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, और हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। Respected faculty, seniors and my dear friends, Dr. Kumar, I am Bharat of Civil Department 2020 batch. I am going to present a Hindi poem on Dr. B.R. Ambedkar on his 131st birth anniversary. So I want your attention.
भारत का भाग्य विधाता, समानता का साथ था उसको भाता। सदैव अहिंसा की राह को उसने चुना, सदैव अहिंसा की राह को उसने चुना, केवल आत्मा की आवाज को सुना। रामजी राव और भीमाबाई के सबसे छोटे सपूत, रामजी राव और भीमाबाई के सबसे छोटे सपूत देखकर चारों ओर असहनीय छुआछूत। शोषितों के लिए लड़ने का बेड़ा उसने उठाया, शोषितों के लिए लड़ने का बेड़ा उसने उठाया। कभी तो मानवता का सच्चा दूत कहलाया, कभी तो मानवता का सच्चा दूत कहलाया। सच्चाई का हाथों में लेकर शस्त्र, सच्चाई का हाथों में लेकर शस्त्र, एकता के मंत्र को बनाकर अस्त्र, एकता के मंत्र को बनाकर अस्त्र। अपने आत्मबल से सियासतों को हरा दिया, अपने आत्मबल से सियासतों को हरा दिया। हर अधर्म को मानव के कदमों में झुका दिया, हर अधर्म को मानव के कदमों में झुका दिया। महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाकर, महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाकर दासता की बेड़ियों से उन्हें मुक्त कराया। हर क्षेत्र में मिली उनको बराबर की भागीदारी, देश को तरक्की का एक नया रास्ता दिखाया, देश को तरक्की का एक नया रास्ता दिखाया। अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे सदा, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे सदा को, मानव को मानव और उपकार करना सिखाया, मानव को मानव और उपकार करना सिखाया। कृष्णा त्यागी कठोर तपसा जीवन अपनाकर, कृष्णा त्यागी कठोर तपसा जीवन अपनाकर वो लौह पुरुष फिर संविधान निर्माता कहलाया, वो लौह पुरुष फिर संविधान निर्माता कहलाया। बाबा साहेब की शिक्षा से हम कभी नहीं भूल पाएंगे, बाबा साहेब की शिक्षा को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। युगों युगों तक इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे, सौहार्द की नई मिसाल बनाएंगे, सौहार्द की नई मिसाल बनाएंगे। बाबा साहेब का सपनों का नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। Good afternoon everyone. I am Ambedkar from Civil Engineering Department 2020 batch. आज जिनके जन्मदिन पर गीत है हम गा रहे, जीवन में कुछ करने की सीख है हम पा रहे, प्रेरणा लेकर के जिनसे प्रगति पथ पर है जा रहे, स्वर्ग से भी नित्य हम पर आशीष बरसा रहे। शून्य भारत में गया संगीत साधु छेड़कर, युग नियंता युग पुरुष भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर 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 श्रद्धा सुमन करते हैं अर्पित, जिनके हम सम्मान में, जिनके विचारों से हुई वृद्धि हमारे ज्ञान में, दुनिया की अच्छाइयां डाली है संविधान में। दैनिक सूरज की तरह होता है सफल जहान में, कुशल से तेरा समय का गया है चित्र उकेर कर, वो युग नियंता युग पुरुष वो भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर 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 विकट समस्या थी समाज में, गांव-गांव में, जन जन में, सह सकते थे कैसे बाबा, लगी थी उनके तन मन में। खुशहाली लानी चाहिए थी भारत माँ तृण तृण में, नई जान फूकी थी जिसने इस माटी के कण कण में। जीवन जिया उन्होंने सारा जब में खुशियां बिखेर कर, वो युग नियंता युग पुरुष वो भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। थैंक यू। Good afternoon all of you. I am Ambedkar from Civil Department 2020. कलम है शस्त्र है, कलम है शस्त्र है, वस्त्र संविधान है। कलम है शस्त्र, वस्त्र संविधान है, देश का तिरंगा मानव का शान है। संघर्ष ही जीवन कहलाता भीमराव है, संघर्ष ही जीवन कहलाता भीमराव है, भीमायु का लाल वो देश का अभिमान है। 14वां प्राणी जिसने हमें पिलाया, 14वां प्राणी जिसने हमें पिलाया, बेड़ियों को तोड़कर स्वाभिमान दिलाया। बेजुबा की जुबान शोषित की आवाज है, बेजुबा की जुबान शोषित की आवाज है, बाबा साहेब पर हम सभी को नाज है। कलम है शस्त्र है, वस्त्र संविधान है, कलम है शस्त्र, वस्त्र संविधान है, देश का तिरंगा महामानव की शान है। छुआछूत ऊंच नीच बेड़िया जो तोड़ी, छुआछूत ऊंच नीच बेड़िया जो तोड़ी, मनुष्य स्मृति के रीढ़ की हड्डियां जो मरोड़ी। जीवन संघर्ष है नाम ही आदर्श है,
जीवन संघर्ष है, नाम ही आदर्श है, बोलो जय भीम तो होठों को भी हर्ष है। कलम है शस्त्र वस्त्र संविधान है, कलम है शस्त्र वस्त्र संविधान है, देश का तिरंगा महामानव की शान है, महामानव की शान है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जवाब ना हो ऐसा कोई सवाल मिले, वो राह दिखाती लोगों को जल्दी कोई मशाल मिले। मैंने इतिहास के पन्नों को कई बार पलट के देखा, कि मैंने इतिहास के पन्नों को कई बार पलट के देखा, बाबा साहब जैसी दुनिया में दूजी ना कोई मिसाल मिले, दूजी ना कोई मिसाल मिले। एवरीवन, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं राजस्थान से हूँ। मैं आज के दिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे मैं स्पीच देना चाहता था, पर स्पीच मैं नहीं देना चाहता, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बहुत उपकार किए, सब तो उपकार किए। हिंदू धर्म में दो बहुत बड़े कलंक थे, एक जाति प्रथा, एक स्त्री प्रथा, दोनों उन्होंने धोए। ये बहुत बड़ा उपकार किया है। वैसे तो बहुत लोग हुए थे इन कलंकों को धोने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक धो भी दिए थे, नहीं धो पाए थे। उनके नाम भक्त रविदास, कबीरदास और बहुत सारे हैं। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि आज अगर हिंदू धर्म में कोई बुराई नहीं बची है, कुछ बुराई है जो खत्म भी हो रही है, तो वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। वो भले ही मरे हिंदू के रूप में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो हिंदुओं पे उपकार किए वो कभी नहीं भूले जा सकते। धन्यवाद। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी भूल मत जाना उस महामानव को, जमाना कह रहा है बाबा साहेब जी को। Respected faculties, seniors and my dear friends, good afternoon to all of you. I am Saksham Kohli of Chemical Department, 2019 batch. I am going to present Hindi speech and poem. आज अम्बेडकर जयंती है। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मुंह में मां भारती के एक सपूत ने जन्म लिया था। इन्हें हम सम्मान से बाबा साहेब, कलम के बादशाह, कमजोरों के मसीहा, संविधान के शिल्पी आदि उपमानों से पुकारते हैं। समाज के पिछड़े वर्ग में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन की तमाम चुनौतियों से डटकर मुकाबला किया और उच्च शिक्षा हासिल कर सम्मानित स्थान हासिल कर पिछड़े वर्ग एवं औरतों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और कामयाबी भी हासिल की। सभी साथियों को जय भीम। बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर आपका दोस्त सक्षम कोहली कुछ बेहतरीन हिंदी कविताओं का संग्रह आपके लिए लेकर आया है। भीमराव जीवन के जीवन पर आधारित इन कविताओं को बच्चों तक जरूर पहुंचाए, हमारी पीढ़ी सुखी रहे। इसीलिए पुरखों ने क्या क्या कष्ट सहे, ये सब कुछ बाबा साहेब पर लिखी कविता में अवश्य देखने को मिलता है। चलिए आपकी पसंद की कुछ कविता पढ़ते हैं। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर पर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत के संविधान की थी जिसने रचना, ऐसे वीर की सोच से हर बुराई को है बचना। अच्छी सोच के आड़े जो कोई भी आता है फिर सही पथ पर ही निकल जाता है। बताया सबने मगर इन्होंने दिखाया करके, बढ़ चले वो आगे फिर सब वर्गों को एक करके। ना मोह का बंधन ना थी जिसमें लालच किया, निडर होकर लिया जिन्होंने हर परिस्थिति में बात। जो बरसे अंगारे या बरसी शब्दों की मार, चुप ना बैठे वो कभी मान कर अपनी हार। ऐसे भी युगों युगों में एक ही आते हैं, प्रदर्शन कर अपने गुणों का वो अनोखा इतिहास है रचाते। मेरी तुम्हारी कुछ नहीं उन्होंने समझा हमारा, कुछ ना लिया तुमसे फिर भी कर दिया सब कुछ तुम्हारा। जाति धर्म की लड़ाई में बढ़ गया था ये भारत देश हमारा। अपने जीवन की ऊर्जा से उन्होंने फिर सबका जीवन था सवारा। सहते वो कब तक सबकी जो लगी हवाओं में भेदभाव की चपकी। ओढ़ी उन्होंने हर वो धर्म की चादर, सिखाया इस दुनिया को फिर प्यार से आदर। भेदभाव कर आपस में बढ़ा तो कोई कुछ हासिल नहीं कर पाता। नफरत की आग से ज्वाला सच्चे धर्म के बीच को जलाता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। Respected dignitaries, my dear colleagues and students, it is not possible to describe life and work of Babasaheb within few minutes. So I will highlight some points, some important things which I think everyone must have to know. Generally, people recognize Babasaheb
who enforced or provided the reservation for lower caste. Okay, but it is not true. It is not true. He devoted his whole life to the nation and people of nation and towards the people of nation. Right from the writing constitution for India, creating law for child labor, implementing 8 working hours instead of 12, similar property right for girls, creating or enforce the creating RBI, Central Power Board, and many more things, But on his birth anniversary, what we can learn from his life. Okay, he always fight for the people of lower caste. But remember, he never discriminate between the people. He never discriminate anytime. Okay, that is first thing. Second thing, Babasaheb is always fight against the people who are discriminating people based on caste and religion. But same time he never insulted any people or any religion. And one more important thing is, at a time of independence, Babasaheb is not agree with the many decisions of mainstream leader. But when the time came, okay, जब बात आई कि constitution बनाना है, तो Babasaheb is the leader. Babasaheb was the leading whole team for creating constitution. And मेन थिंग जो उनके बारे में मुझे बतानी है वो ये है कि जब कभी कोई उनसे मिलता था, जैसे एक लॉयर हो गए, जो कोई उनसे मिलता था, जब पूरे डिस्कशन के बाद वो जब वहां से निकलता था तो उसको लगता था मैंने किसी कंट्री के बहुत बड़े लॉयर से मीटिंग करके आ रहा हूँ। देन अगर कोई उस टाइम के बिजनेसमैन या टेक्नोक्रेट जब उनसे मिलने जाते थे तो उनके पास इतनी विजडम या उतनी आइडियोलॉजी थी कि उनसे मिलने के बाद उनको लगता था कि मैंने बड़े टेक्नोक्रेट या बड़े बिजनेसमैन से डिस्कस किया है। एट द सेम टाइम जब कोई एक लेबर या छोटा बच्चा उनसे मिलने जाता था तो वो इतना ग्लैड हो जाता था कि बाहर आके बोलता था कि ये हमारे बाबा साहब हैं। ओके, मीन्स बाबा साहब ने ऐसा नहीं है कि ओनली लोअर कास्ट के लिए कुछ किया है, ऑलवेज उनके माइंड में थिंकिंग था फॉर नेशन एंड पीपल ऑफ नेशन। वो जो उन्होंने जितने भी सारे काम किए हैं वो आप उनका लिस्ट देखेंगे तो उनसे आपको उन सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ओके, सो ये जो उनके पास इतना ज्यादा नॉलेज था, हर एक फील्ड में जो इतनी मास्टरी थी, वो किसकी वजह से थी? वो इज ओनली बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द उनके पास जो एजुकेशन था या उन्होंने जो लर्न किया उसकी वजह से था। तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम उनको क्या ट्रिब्यूट देंगे? इतने बड़े महामानव को भी कहना, मतलब ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि एजुकेशन इज द की जो पावर्स है। ओके, तो स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट, educate, be good, educate yourself and do something for your nation and people of the nation. Okay, Jai Hind, Jai Bharat. Good afternoon to all. Honorable Babasaheb Dr. Bhimrao Ambedkar. Today's function chief guest DhClickster and my dear friends, my dear students. Today is the great day for our country. जैसा
सभी को मालूम है हम 131st एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है आज। तो अभी काफ़ी लोगों ने, काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत कुछ उनके जीवन से रिलेटेड, उनके जीवन में जो लोग उन्होंने अपमान सहे या तिरस्कार सहे, उसके बाद भी हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान किया और उसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ। मुझसे पहले काफ़ी गर्मी मिशन के बारे में जिग्नेश सर ने बताया। मैं भी कुछ थोड़ा सा अपने जीवन पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब दलित समाज को एक मानव जो जाति का अंग माना ही नहीं जाता था। उन्हें जस्ट लाइक द एनिमल ट्रीट किया जाता था। भीमराव अम्बेडकर के पिता अंग्रेजों के यहाँ जॉब करते थे, सेना में थे, बाद में सूबेदार भी हो गए। जब रिटायरमेंट हुआ तो वो आप जैसे मालूम है 14 संतान थे अपने माँ बाप की, सबसे छोटे पुत्र थे। रिटायरमेंट के बाद जब वो गए वहाँ से, रिटायरमेंट के बाद सतारा चले गए। सतारा में जाके उन्हें पढ़ाने की कोशिश की। उससे पहले जो बच्चे थे उन्हें पढ़ा नहीं पाए इतना, और न ही बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा थी। और मैंने जैसे बताया कि हमारे समाज की ये दुर्दशा थी कि हम जो दलित जिन्हें बोलते थे, महार जाति में पैदा हुए थे, तो इस वजह से उन्हें कोई अधिकार, पढ़ने जैसा अधिकार के बारे में सोचना भी मुश्किल था। तो जब फाइनली देखा उन्होंने, ये सबसे छोटा पुत्र बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत पढ़ने को लेके इच्छुक है, स्मरण शक्ति अच्छी है उसकी, तो उन्होंने, पिता ने प्रतिज्ञा की मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के लिए कोशिश की तो एडमिशन मिला नहीं कहीं पे, क्योंकि कोई भी स्कूल पढ़ने की बात तो छोड़िए, घुसने देने के लिए तैयार नहीं था। जैसे अभी एक कविता में बताया भी था कि पानी पीने का अधिकार नहीं था, कि वो ऐसा नहीं कि उस समय कुएं हुआ करते थे जिससे पानी निकाल के पीते थे, तो पानी भी पीने दें। किसी भी तरह का समानता के बारे में सोचना ही थोड़ा मुश्किल काम था। ये उस समय जब उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ नौकरी की तो वो अंग्रेज के पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरे को अपने बेटे को पढ़ाना है। तो अंग्रेज उनके जो पूरा टाइम काम किया था उससे काफ़ी प्रभावित था। उनके पिता की रिक्वेस्ट पे उन्होंने स्कूल में एडमिशन करा दिया। एडमिशन होने के बाद जब पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर वही डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, बताया जैसे समाज में, तो उन्हें बाहर से पढ़ना पड़ता था। क्लास में बैठने की अनुमति नहीं थी, मतलब उसको उसके टीचर या उसके जो साथ के स्टूडेंट थे या उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। बहुत इंटेलेक्चुअल थे, पढ़ने की बहुत ज़्यादा जिद थी और इस तरह से उन्हें लगता था कि जैसे बताया कि शिक्षा ही वो, उनके पिता ने भी उन्हें सिखाया था, माँ ने भी उन्हें सिखाया था कि वो शिक्षित हो पाए तभी वो समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो एक छोटा सा बच्चा जो 5 साल 6 साल का है उसे समय समय पे विस्तार मिले, उसके बाद भी वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, कुंठित नहीं हुए और उसको अपना टूल बना के, उसे अपनी शक्ति बना के पढ़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे लोगों ने, समाज ने उन्हें स्वीकार तो नहीं किया, पर उनकी जो पढ़ने की इच्छा थी उस वजह से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ता था कुछ चीज़ों को। जैसे वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा तेज थे कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल था, उनकी हेल्प लेनी पड़ती थी। जब उनके क्लास के में धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट दोस्ती करना स्टार्ट की, कुछ समय के साथ साथ जब वो पढ़ते चले गए तो फाइनली पिता की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी नहीं, आर्थिक स्थिति, तो पर उन्होंने स्कूलिंग करने के बाद बड़ोदरा के एक राजा थे, उन्होंने देखा कि उस बच्चे में बहुत प्रतिभा है। जैसे हम लोग आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम में वो आए हुए थे, उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को स्टेज संभालते हुए या अंग्रेजी बोलते हुए थोड़ा सा देखा तो उससे प्रभावित हुए। उन्होंने उससे छात्रवृत्ति दी, स्कॉलरशिप, जिससे वो बाहर पढ़ने गए।
बाहर पढ़ने जाने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद दोबारा वो सेना उनके राज्य में वापस आ गए और राज्य में आने के बाद उस समय अच्छा पढ़े लिखे रहे। ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात होती थी। ये 1919 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ग्रेजुएशन की थी उन्होंने। उसके बाद जब वापस आए तो उस राजा के यहाँ बड़ोदरा के महाराज के उनके यहाँ सेना में उन्हें मुख्य पद दे दिया गया और सेना के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया कि ये कोई दलित है, मार जाति का है, इसके साथ में काम नहीं कर सकते, इसकी कांग्रेस में या इसके अंदर से करने में काम नहीं कर सकते। उसके बाद भी मतलब चाहते तो वो अंग्रेजों के साथ में उस समय अच्छी मतलब पढ़े लिखे थे तो अच्छे पद पे रह के काम कर सकते थे, अपना जीवन यापन चला सकते थे। उन्होंने देखा समाज की स्थिति वही है जो उनके जन्म से तिरस्कार चले आ रहे हैं, उसी तरह का तिरस्कार अभी भी है। फिर दोबारा पढ़ने चले गए डिग्री की, जैसे किसी ने अभी बताया भी था कि इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी किया। दैट इज द ग्रेट थिंग। उस समय मतलब इंडिया में ऐसा कोई सोचता भी नहीं था इस तरह की एजुकेशन के बारे में, हम गुलाम थे अंग्रेजों के। उसके बाद उन्होंने उस कठिन समय में शिक्षा को बहुत महत्व दिया। शिक्षित होने के बाद 10 साल बाद फिर वापस आए। जब वापस आए तो बैरिस्टर बन के आए थे। उस समय तक अपने लोगों के लिए, अपने लोगों का मतलब केवल अपने समाज से नहीं था, अपने लोगों का मतलब था अपने हिंदुस्तान के जितने ऐसे लोग जो जिन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे या जिन्हें एक तरह से समानता का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी वर्ग से था, उन सारे लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया। और वो विषय कहाँ से आ पाया? वो जैसे अभी जिज्ञासा ने बताया तो उन्होंने एजुकेशन ली और उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आज जो हम एक पूरा संगठित भारत है, इतना बड़ा देश जिसके लिए सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, वो एक केवल एक आदमी की वजह से पॉसिबल है, वो भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने हमारे देश के लिए ऐसा कानून दिया, ऐसा संविधान बनाया कि जिसमें सभी के लिए एक जैसे एक बराबर अधिकार है। आपको वो शायद काफी लोगों को मालूम नहीं होगा, पर उस समय जब 1936 में चुनाव होने लगे तो उस समय दलितों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। उन्होंने पहला आंदोलन किया और आंदोलन में वोट का अधिकार मांगा। मतलब एक हमारे जो समाज था उसमें से भाग कटा हुआ था, उसे फिर से जोड़ा। मतलब संगठित भारत करने की जो सही परिभाषा है, हम महात्मा गांधी को बोलते हैं। महात्मा गांधी ने भी हालांकि विरोध किया था उस समय, आमरण अनशन पे चले गए थे। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार दोगे तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। उस वजह से वो उस समय तो पीछे हट गए, पर दोबारा जब 1947 में देश आजाद हुआ और उन्हें मौका मिला तो उन्होंने संविधान में इस तरह के अनुच्छेद बनाए, ऐसी उसके अंदर धाराएं डेवलप की कि आज की डेट में हम देख पा रहे हैं कि जाति की कुरीतियां हैं धीरे धीरे अभी खत्म तो नहीं हुई है, पर धीरे धीरे डिटोरिएट होती जा रही है। और जो इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी हम सब संगठित हैं, जिसका सारे लोग दुआ मानते हैं पूरे विश्व में आज भी। तो वो सब देन है बाबा भीमराव अम्बेडकर की। तो हमें उनसे कुछ ज्यादा बड़ा ट्रिब्यूट नहीं दे सकते, तो ये तो कर ही सकते हैं कि हमें इक्वलिटी में विश्वास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो एजुकेशन है उसको टूल बनाया इसीलिए गया है, एजुकेशन इसलिए गया है कि हम किसी में डिस्क्रिमिनेट ना करें। आज भी ये है हमारे समाज की बुराई है कि अभी भी हम जाति प्रथा में बटे हुए हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हम और सबको तो नहीं बदल सकते, पर अपने आप को कोशिश करना है कि हम इस तरह की चीजों से ऊपर उठ के एक बराबर सभी को एक जैसा अधिकार दें, एक तरह से सोचें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं, क्योंकि काफी कुछ डिस्कशन हुआ है, आप लोगों से ये उम्मीद रखूंगा कि यहाँ पे जितने इस सभागार में बैठे हैं उन लोगों को ये प्रण लेके जाना चाहिए कि हम सभी को एक नजर से देखें, सबको इक्वलिटी का, हमें कुंठित नहीं होना है, हमें ये फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि उसको ज्यादा मिल गया मेरे को कम मिल गया। हम अपने आप को सुधारेंगे तो धीरे धीरे समाज आगे बढ़ेगा। और मेरे को एक घटना याद आ रही है, चर्चिल उस समय जब 1947 में आजाद हुआ तो चर्चिल ने बोला था कि ऐसा भारत देश में एक संविधान बनाना असंभव है, एक रूल बनाना, एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जिसकी वजह से आज हम ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो गए तो भी
पूरी तरह से उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आने वाला टाइम बहुत ब्राइट है गवर्नमेंट ऑफ इस हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि हम ओनली कंट्री है जो इतना बड़ा डेमोक्रेसी होने के बाद भी एक प्रेसिडेंट चुनते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो पा रहा है वो हम करके दिखा रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हमें जो उनका बनाया हुआ संविधान है उस संविधान को फॉलो करें और रियल मायने में बाकी सब अपने अपने रिलीजन के हिसाब से गॉड की परिकल्पना करते हैं। यदि हम इंडिया के हिसाब से देखें तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ही रियल गॉड है इस देश के, जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया जिसकी वजह से हम सब आगे बढ़ के आगे एक जैसा इक्वलिटी का जीवन जी पा रहे हैं। और जो मैंने बताया था पहले, जिसे मतलब पानी पीने का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार है, वो सारे अधिकार आज हर एक आदमी को है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जनजाति से हो या फिर किसी भी इंडिया के किसी पार्ट में रहता हो। तो इन शब्दों के साथ मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सब एक इक्वल नजर से सभी को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनके बताए हुए सिद्धांतों पे चलें। धन्यवाद। Jai Bhim to all. Very good afternoon. And today's function on 31st birth anniversary of Babasaheb Dr. Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar. And today's function showcase respected Dr. DhClickster and my colleague Dr. Pali and all other my colleagues and dear friends. Today we have gathered here to pay our tributes to the one of the greatest Indian who has served his life to protect the rights of human rights in this country. Not only in this country, he has shown the way to the whole world so that they can follow his guidelines and treat every human in equal way. So he has also mentioned, I will go one by one. What he has done, so why we are paying tributes to him today, why we have to recognize and why we need to remember him. Okay, so that there our question will start, isn't it? We have to first think that what he has done and how he has done. Okay, from where he has come and how he has emerged as an intellectual and how hard he has worked and what message we have to take from that. Babasaheb once said in his final speech, I remember, that his life is message to the people. His life is message to the people. Okay, he has said, I quote him, my life is my message to the people. Okay, unquote. So in this, what we can understand from this, how he has worked for the welfare of this society. Okay, so people remember him as a chief architect of the Indian Constitution, right? But we also need to understand that before that also, he has done many movements, he has fought for the human rights as I have already mentioned. Okay, so in this direction, if you look at the Constitution of India, what is Constitution of India? Has anybody read that? How many of us have read that? Okay, so have you gone through his degrees? What degrees he has earned? Have we gone through that? Okay, so what we need to do first, we need to understand that what degrees he has earned. To do 1 degree or 2 degrees, we are struggling this much these days. Okay, so in those days, right, from the economics to the science, so from where he has come to
way. Okay, so we need to understand that. When he was writing the constitution, right? Our constitution is not a rigid body. So someone was taking the pledge with us. Okay. So until and unless the rule is there, the canon is there. Okay, you can obey that. But I will change the rule. With the majority on my side, I will change the rule. Then what you will do? Your pledge is gone. Isn't it? Right? So when he was writing in the Constituent Assembly debates, he has quoted Thomas Jefferson, the President of American USA. What he has mentioned? He has mentioned that every generation is a nation. Every generation is a nation. What does that mean? At that moment, when we have taken the reference as the location as the reference for the nation. Okay, we have taken location as the reference for the nation. If you take the time zone as a reference for the nation, so every generation is a nation. Okay, so you cannot bind the next generation with your rigid rules that which have framed for this current period. Okay, so that's why he has mentioned that the constitution should not be rigid. With the power, with the will of the majority, you need to change that in the time. Okay, so he has made the constitution in that way. And people also, since we are discussing about the constitution, we need to understand the constitution. What is happening in the constitution? People say if something good happens because of the constitution, people say if something good happens because of the constitution, they say Dr. Ambedkar was not only the person who has written the constitution. There were many members, right? But something bad happens, then they blame Babasaheb. Okay, so the dual standards of the people of this country are clear at this moment. Okay, so what we need to do at that time? See, he has mentioned while writing the constitution in the Constituent Assembly debates, it is a machinery. Constitution is a machinery. If it is in the good hands, it will be obeyed and it will be delivered in that way. If it is in bad hands, obviously, see, rules are there. And if you go to the annihilation of caste, is notable word, annihilation of caste. Okay, so in that what he has mentioned that there is a clear distinction between the principles and the rules. What are the principles? What are the rules? Okay, but rules are cooking recipes. Means they are there, you will just follow them. Okay, but whereas the principles, what about the principles? With your consciousness, you will understand what is good and what is bad, and based on that you will take the decisions. Okay, so in this way, he has mentioned all those things. And what Babasaheb, the life story of the Babasaheb has been described by my colleague Dr. Bharat. I will not go into that section. But what is the relevance of the Babasaheb in today's era? Means how he is related to this generation. Okay. So people see, those who are again in the classes also I will say, those who are not interested, please don't disturb. Let them listen, those who want to listen. Okay. Yeah, here the Constitution. What about the Constitution? Constitution treats the people of this country as a child, and it protects from the birth to the death of that person in the timeline. See, the child, when the child comes, arrives into this earth. So what needs to be done to that child? From there to when he or she enters, the child enters to the age of before 14 and the school going age, he has provided the right to education,
right to education. Okay, so there you have the right, irrespective of your gender, caste, color, and everything. Whatever the discriminating, what is the potential that has potential to be discriminated. So irrespective of that, religion, everything. Okay, so in that way, he has provided the rights to the people of this country, equal rights. And yeah, I have to mention that because many people think that the reservations. Okay, without quoting this, you will not end the discussion on the Dr. Babasaheb, Dr. B.R. Ambedkar. But here, on this occasion, I want to clear something about this. India is a representative country, representative democracy. What do you mean by representative democracy? You need to have all the people. All the people's representatives must be there to discuss. Okay, so let us take the hostels. What I will give you the live example. There is a hostel committee meeting. Okay, so from the Jhilam to the girls hostel, all the hostel members need to be there, isn't it? If you will continue the meeting without any hostels representative, do you complete that? Right? That is the way that reservations or the representatives have been mentioned. How it has been mentioned? See, if you say the so-called merit, what you call it as merit, right? So there are many people. They are they have talkative nature. They can easily talk. They are all in one hostel. Let us say Jhilam hostel. Okay, and they are all in one hostel, staying in one hostel. Okay, and now the problem comes in the industry. So does the person staying in the Jhilam can understand what is the problem in the Jhilam? These leaders? No. Which means the person who is staying in the Indus hostel has to come to represent them who is there. Okay. So that's why you need to put the location, put the seat reserved for them. Okay. The same way the reservations are being given. Otherwise, what would have happened? They would have asked for a separate places, separate countries. It binds that whatever the provisions that are provided in the Constitution of India, they bind that we have the idea of the nation. The idea of the nation comes from this. Okay, otherwise what would have happened? Means you can see now in many places, in the rest of the world, you can go. They are like countries have been formed from the large countries. Means there are many issues. Apart from this representation, so based on that they have divided. Means it would have been a major factor to divide the countries. Okay, so that's why it binds the. Means see at the education institution, we need to understand, we need to analyze, critically analyze. And then he says, Dr. Babasaheb Ambedkar says, one more thing. What is that? Social reform in India has few friends and many critics. He was soft in describing this. If I would have been there, right, I would have said it as it has many enemies. What does it mean? See, he is notable other works in castes in India, right? And who are the Shudras and the untouchables. He mentions that what are the root causes for these social events in this so-called Indian society. Okay, what are the root causes? So, why I am discussing all these things here? Because he has shown the solutions. After thorough study of the past history. So again, he says, I quote, those who do not know the history, they cannot create the history, unquote. Okay, those who do not know the history, they cannot create the history. Okay, so which means you have to know the history. Without
having any opinion on any person, even on me after this speech, if you have any opinion on me, that is fine. Means if you need to have an opinion on anyone, okay, so you need to first understand why they were in that position. Okay, but what does that mean? You need to first understand what was happened to Maharaj. Okay, yeah. Now I have started from the same. So to the youth of this country, one of my colleagues has already mentioned. They were only, but he was partially mentioning that what was happening. He was mentioning that only the untouchables of this country were not having the right to vote. But I add to that the women of this country, and he has also written the rise and fall of Hindu women. So, girl students, you can read this. The rise and fall of Hindu women. Okay, so he has also mentioned what was the problems faced by the women in that area, in that time, in that era, and see, he has touched all the problems of this country, and he has shown the solutions. Obviously, due to the other many issues, they might have not followed his suggestions. Okay, with the vested interest of those times leaders. Okay, so youth of this country, what he has made the right to vote when he or she arrives at the age of 18. They will be given right to vote. Means you choose your representatives. Okay, so this way he has given, and another one to the women especially, the maternity leave. How many days they have, those who are working women. So for those also he has given the provisions, right? So in this way, if I start saying all these things, the works of the Babasaheb, Dr. B.R. Ambedkar, so it goes on. Okay, so but I will not go into the details of all those things. But now what we need to do? Next comes this: how we can pay the tributes to the Babasaheb. Okay, so at the end we have to tell that, na? Right? In this, what is the way? So that's why he has mentioned the time, treasure, and the talent. Time, treasure, and the talent. 3 T's. Okay, so see these measures, this message is not only to the particular section students. It is in general. Means you can have, everyone can take something from Babasaheb. Okay, so if you see his struggle to study, if you see the struggle of Babasaheb to study, so from the place where he has come, what was the facilities at that time? Okay, so those, if we compare that, we have major facilities. So with that what we can achieve. If he would have achieved, if he has achieved that much, then how much we can achieve with the facilities that we have. Okay, so in that way we have to now think. First, right? Time, talent, and treasure. So payback to the society is another message. Payback to the message, or payback to the society. Okay, so in this way, now what I will suggest on this occasion, on the eve of 131, Bharat anniversary of Babasaheb, we need to study. Whatever field we have taken, whatever the department we have taken, whatever the branch we have taken, we need to study. We need to fulfill his message, fulfill his goal. We need to study, because that goal is to represent our societies, to represent our regions. We need to study better, and we need to perform in that way, and then we can take reference to him. Okay, and then once you complete this act of doing or studying or getting your degrees and getting job, right? Then what we have to do? We have to go to our roots. Right? When see your father, the fathers of their families, wherever they go to the villages, nearby villages, right? But what they think, if they cannot
return to your homes on the same day, though they are mothers, we should not do that, either father or mother. If they go to the other village and they could not return on the same day to the home, what they think? They will think whether our children have taken food or not, and the same way we have to think about our societies from where we have come. Okay, so we need to do and we need to keep that in mind. That's why, because otherwise he would have completed his life lavishly. What he could have, right? You know that he has sent 5 people to the other countries and they could not return. They did not return, and they have earned so much money. See, one person has come after studying so much outside abroad, and he could do this much. So that's why in his lifetime he has sent 5 people to study abroad. Okay, but what they did not return. So that mistake we should not do. We need to see whichever the community, whichever the region, all those things. And I need to mention one more thing. Sorry. In the Constituent Assembly debates, again in the Constituent Assembly debates, when he has also written the states and minorities, right? To the minorities, what he has done. Okay. To the minorities, what he has done. In the Constituent Assembly, he has mentioned that we need to take the opinion of the minority. Though we have representative democracy, and the majority, obviously, the side that is having a majority will win, obviously. But you should not leave the opinion of the minorities. You need to consider their opinion, whatever the, and he has also mentioned the opposition of this democracy. Survive any democracy, the opposition should be vigilant, right? And it should act in that way. So all these things means he has not touched, means the point, there is no point, there is no issue that is untouched by this intellectual. And one more thing he has mentioned, in any society, intellectual class is the most influential class. Intellectual class is the most influential class, and the rest of the society will either imitate them or follow them. Okay, so since we will be becoming the intellectual class of these societies, various societies, we need to be in a position that the others can follow us or imitate us. Okay, so with this, I once again pay my thanks to Babasaheb, Dr. Bharat, Dr. B.R. Ambedkar, and I also thank you, the organizing team, for giving this opportunity. Thank you. So, on this is first time I'm also addressing the gathering. Just I will share my experiences with you. Although I am not a person to address these issues, to talk about this. So recently, last 2021 September, the government of India has given the information. So all the recruitments, whether it may be like education system or maybe a centrally funded institutions, they have to conduct the recruitments, the special recruitment drives. The special recruitment drive is not only for faculty positions, it is also for the members, like the public sector undertaking, PSUs. Recently, they also completed, most of the institutions, they also completed the special recruitment drive. So if you see that the many recruitments, especially like the SC category and ST category and OBC category, they are not finding the suitable people. This is the way they are saying. But it is not the way, that is not the correct way. There are people who are already equally qualified, but because of some other reasons, other
they are not completed this. So that's why the ministry has taken the initiation, the government has taken initiation, especially they have to conduct, they are not merging with the reserved categories, that is unreserved people, and they are conducting a special drive for SC category and ST category and economically backward categories. So such an importance is given ministry. Recently see the main issues related to the main agenda points with respect to the today's speech. My friend Dr. Purilla and also Dr. Bali and Jignesh already addressed the issues, but I will add few of them. If you write one publication, I will tell you from my experience, if you write one publication and if you send one publication to some review, we are waiting for 3 months or 6 months or 1 year also for getting the comments. And in that also, the reviewers, they are giving so many comments and we are writing them. And we are also giving a reply to that comments and finally it is accepted. The person who already prepared the constitution is the chairman of the committee for the constitution preparation. So it is happened in 1947, 29th of August. So he is one of the members, that here Ambedkar is one of the members, the chairman of this Constitution of India. If you write one paper, it takes so many days. And he completed this Constitution of India within a few years. And also, the main addressing point is untouchability. It's already addressed. So untouchability, he already addressed this point. He is given the more importance to the education system, because usually I will also follow some of the serials and the TV. In the evening, especially at 5 o'clock, this Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar, Babasaheb, B.R. Ambedkar serial is also coming. My children, my son and my daughter, they are also regularly watching this program. And yesterday I given assignment to my son, because I am also going to speak about today's function. We will prepare some of the major points that I will address to the gathering. So he has done the nice drafting, and I just I will have to go to these points. I will just address this. So he has done 3 PhDs. So one PhD is a lifetime achievement nowadays, but now before 90s, he already completed 3 PhDs. And in 1970, again he coming back to the India, and he served as the first military security officer in Bharat, state of Bharat, and also later he became as a professor in the college, government law college. He also become as a professor in government law college. And one more thing is, Dr. B.R. Ambedkar is a great thinker, and his contribution to the education, there was no equality and freedom to have education. Due to the lack of education, the Dalit become mentally slave, morally degraded, culturally handicapped, economically weak, and socially backward, and there was no social status and dignity for them during those days. But he addressed all these issues, and he already given it was also Ambedkar who told the idea of a free and compulsory education for the first time, so that the poor citizens, that Dalit get educated, as they did not have money to pay for it. In Constitution, it described many articles regarding the education. In the Article 28, 29, 30, 45, 46, and also 350. So we already addressed these articles in the Constitution. And the meaning of education, the person who was showing the meaning of education in India, he was a moral person, and he defined the education system in India.
So the education is a key of social progress, because only the education will change the present state to the future state. So that's why he mentioned in his constitution, the Constitution of India, the education is a key of social progress, and also it helps a man outgrow the creeping infiltrations and also ignorance and suspicions of enabled him. And he also mentioned, Dr. Ambedkar Ji also mentioned that the education is not only the bright right of every human being, but also weapon of social change. So it is a weapon to change the social. So anyway, as the institute is also nominated me as a liaison officer for SC, and OBC and EWS category. So from now onwards, because now this event is organized, from whatever the possible ways in the education point of view or social activities with respect to the this particular cell, please come forward to me and approach myself as well as some officers also, Dr. Babasaheb and all the faculty members. Whatever the possible ways, I will also do from my side, because I also verified some of the other institutions, they are doing GATE coaching classes under the SCSD cell. So the similar activities also we will plan in our institution. Whatever the problems, we will resolve here, and also we will also try to conduct more such type of events in future. So next year I hope we will also organize this event in a bigger fashion. So we will also conduct some cultural events, cultural activities. So it's not only one day to celebrate. If 14th April is not the day to celebrate Dr. Ambedkar birth celebration, at least for 1 month prior to this, we will start the activities in the campus, and we will recognize such a person. Nowadays, what we are doing is we are conducting the festivals, we are celebrating the festivals. So this birth is also a festival of our Indian Constitution. So we need to understand this point. So we need to recognize this issue, and we will respect each other. Because I will also address one point, because I got the opportunity to speak. Before this, whatever it may be the category, Dr. Jignesh is already addressed. Some of other human beings, what they are saying is, to celebrate the birth anniversary of Dr. Ambedkar, this is only related to one category. This is only related to the one community. This is not related to only one category or one community. It is that whole India will stand and come forward to celebrate this event. As far as my opinion. And also, you must be a human, good human being. You have to respect your constitution and culture and your faith. Before this category and community and all these things, first we will become as a good human being. We have to respect each other. There is no accountability. If I will get 100 rupees from ministry, or if I will get 100 rupees from the college, how I am to spend. After 1 month, I need to spend the 100 rupees as per the rules given by the institution. So such type of rules already we addressed. There is no, in present days, accountability is the problem. There is no accountability. As a citizens of India, we need to come forward with the accountability and responsibility and social awareness of these activities. And one more point, if you watch the news diary, yesterday there is in the Lok Sabha also. In order to get admission in Kendriya Vidyalaya, the MPs, member of parliaments, are giving 10 seats for every Kendriya Vidyalaya. There is a special category. Every MP is given 10 seats. I don't know whether it is necessary, because that how the member of parliament, some of the people, they are approaching the member of parliament MP, and they are asking the recommendation letter to get admission for their wards. Some of the rich people, and they are also above the poverty line, they are also taking the admission in Kendriya Vidyalaya.
by taking this reference letter from the MPs and their MP. And now recently, the member of parliaments, they already approached. So now you may increase these 10 seats to 20 seats or maybe above that. Now the Ministry and Government of India yesterday, they cancelled that complete bill also. What is the necessity? Why these member of parliaments are going to give admission for our children? So there, the 10 seats are also reserved for the category people. Those who are below the poverty line, they can go to the campus and then the merit, based on their merit, they will get this admission. So such type of initiatives are already taken. So you are also the people, you will also know the better than me about the Constitution of India, all these things. So when I was an engineering student, I used to spend most of my time to study of these related things. We used to spend less time on those studies. And we are only getting social awareness and what is going on. But nowadays, the young youth like you need to pay more attention towards these type of activities and also come forward with your suggestions, and then your young minds will also change the Constitution of India, or maybe there is some possibility to change some of the uncertainties and untouchableness in the India in this in the present situation of India. So thank you for giving this opportunity, because we will also celebrate such type of events more and more in the campus, and we will be more vibrant, and NIT Srinagar is a vibrant campus to do all these such type of events. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your informative speech. You spoke about Constitution and Dr. B.R. Ambedkar. Thank you very much, sir. Now it's time to move into distribution. Now I welcome Honorable Registrar of NIT Srinagar, Professor S.K. Bukhari sir. I request Muskan, please welcome Professor S.K. Bukhari sir, Registrar. Please. Now I request you, sir, please guide us.
called me, but I forgot to call him back because as PCG was with me, we were doing some official business. So later on I found his call and I called him back. So I am here on this invitation. I am here to celebrate this day. So, dear colleagues, I hope scholars are also here. Students, it's a matter of great pleasure and I extend warm greetings to all of you. I feel honored and privileged to have been invited to speak on this auspicious occasion on the birth anniversary of Dr. Ambedkar. This day is not celebrated as a birthday of a person, a man, rather an idea and inspiration, a movement known to us as Dr. Ambedkar. While it is inconceivable to summarize his contributions given the paucity of time of the function, and I am also short of time because I have to go somewhere. Yet I would like to take this opportunity to express my tribute to him and urge the faculty and students of this institution to uphold and practice his legacy, as he is not in age but for all the time. We need not be a revolutionary to be followers of Dr. Ambedkar, but his relentless efforts for the upliftment of society through the power of education and dignity for all should instill in us everyday values that emanate from such ideas. जैसा आप सब लोगों को पता है, and you all of you know who was Dr. Ambedkar. I may not explain more because all the country knows him, his contributions. He is called the father of Constitution of India. He has written the Constitution of India. That's why it is because of him India is called the largest democracy of the world. His ideas of secularism are appreciated and will be appreciated till the end of this world. His conviction regarding women empowerment and firm belief in a modern, democratic and socially just nation is what my dear students is expected of you. At NIT Srinagar, you will see students from length and breadth of the country who have come to pursue their mission with absolute zeal, and you should always cherish being part of such a melting pot of all colors, creeds and religions. NIT is an institution that provides space for healthy discussions and ideologies, and thus it should be a constant endeavor of all the students to be informed rather than judgmental. As Dr. Ambedkar says, cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. I repeat, cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence, and being the torch bearers of future, this is your age and time to cultivate your mind and nurture your thoughts through the prism of Dr. Ambedkar. Set the values of Dr. Ambedkar as your role model, and you will not only progress individually, but our nation will grow exponentially and surpass all others in social, economic, and technological development. Let's all pledge on this day that we will uphold the values of such a national hero in our everyday lives. We won't judge people, we won't discriminate, we will fight for justice and development. We will fight against the evils of the society and freedom of expression, and above all, we will fight for the socio-economic and political development of our country to realize the dream of Atmanirbhar Bharat. Thank you for calling me to deliver speech and to please with me on this auspicious occasion. Thank you all, particularly Dr. Bharat, who reminded me of this function. Unfortunately, I forgot because nobody called me in between. He called me and some police party was here and we were discussing some official business in my official chamber. At that time, I could not attend his call. And
Later on, I forgot I was busy with this board and other agenda finalizing things. So then I called him and he told me that function is going on. So I thought it my privilege and honor to be with you and speak some words about the life of Dr. Ambedkar and his guiding his factors, by virtue of which you all are here. Thank you once again. Thank you very much, sir, for your guidance. I request Ms. Diksha, please offer a moment to Honorable Registrar, sir. Registrar, Honorable Registrar, sir. Moment. This is Sonoroka from Electrical Engineering 2019 batch. Actually, I'm thankful to all management that they have given me chance to play field. आपके सामने मैं एक ताल रहेगी, उसमें वो काटा नहीं है, ताल रहेगी, सुर रहेगा। तो आप इसको पहाड़ी धुन कहते हैं बेसिकली, है ना, जिसमें सिर्फ सारे गामा पादा में 2 स्वर बस नहीं रहते, पा और माध्यम माने गए। अब एक मैं बहुत ही जनरल गाना है, उसका ट्यून बजेगा सिर्फ, बहुत आप लोग गेस करिएगा हो सके तो।
please give vote of thanks. Good afternoon, everyone. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of the whole team, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Honorable Registrar, Dr. Obu Chandrasekhar, and all the faculty members. Thank you. A special thanks to Dr. Majid Hussain for giving permission of the Common Hall. A wide round of applause and thanks to all the participants who made the event a memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here for making time to be with us today and helping us make this event a grand success. Thank you all. Now I request Honorable Registrar Sir and all faculty members for a photo shoot. Please come.